friends, in our previous video we have discussed about the mean value theorems. In mean value theorems we have two kinds of theorems. One is Rolle's theorems and Lagrange's mean value theorem. In our previous video we have discussed the Rolle's theorem and the questions based on Rolle's theorems. In this video we are going to discuss the Lagrange's mean value theorem. So first, the statement of the Lagrange's mean value theorem. Let f be a real valued function defined on a closed interval ab such that condition number one, f is continuous on the closed interval ab. Second, f is differentiable on the open interval ab. Then there exists a c which is greater than a but less than b, such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, which means हमारे पास एक function है whose domain and range they are the subset of real numbers, और उस function को हम define कर रहे हैं on the closed interval ab. That function is continuous, which means the graph of that function is without a break or jump or hole. That means we can draw its graph without lifting the pen. That function is differentiable on the open interval AB. That means at every point on that graph, there is a unique tangent. And we are not including the closed interval because at extreme points, there are multiple tangents. Since the tangent is unique, so we are including only the points which are between A and B. If function is satisfying these two conditions, then we will get a value of, then we get a number c which is greater than a and less than b. एक हमें नंबर मिलेगा जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, at which derivative is equal to fb minus fa upon b minus a. Geometrically ये क्या represent करता है? Let's have a look at that one. Suppose हमारे पास एक function है y is equal to f of x. एज वी नो कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं. सपोज ये उसका ग्राफ है, P और Q इसके ऊपर दो पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स A f ऑफ A और B f ऑफ B है. अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है बिटवीन A एंड B, दैट मींस दैट इज विदाउट अ होल or a jump or a loop. That function is differentiable on an open interval AB. That means every point which lies between A and B, there exists a unique tangent. Then if we join P with Q, if we join P with Q, this becomes the chord of this curve. Then slope of this chord, slope of chord PQ is equal to f of B minus f of A upon B minus A. As per mean value theorem, if function is satisfying these two conditions, then we have a C between A and B such that f dash C is equal to FB minus FA. That means we will get a point C on this curve. We'll get a point C, FC on this curve at which the slope of tangent is equal to the chord. That means this is equal to slope of tangent at C comma FC. So that means Lagrange's mean value theorem जो है वो हमें मदद करता है उस पॉइंट को लोकेट करने में जिस पे टेंजेंट जो होगी that will be parallel to the chord. Now again, if you look at this expression, agar if fp is equal to fa, which was the condition of Rolle's theorem, then fb minus fa will be equal to 0. So this gives you f dash c is equal to 0, which implies which implies which implies Rolle's theorem is special case of mean value theorem. Okay, now let's have a questions based on LMVT to understand it more how to apply these concepts there. Suppose you have a function f of x equals to x minus 3 into x minus 6 into x minus 9 on defined on the closed interval 3 5, or we have to verify mean value theorem on this one. So solution, f of x is equal to x minus 3 into x minus 6 into x minus 9. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्यू माइनस 9x square minus 18x and so on, which again simplifies to
एक्स क्यू माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। एज वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन आर। We have already discussed in the Rolle's theorem that isolate, this is what we have discussed there, where I stands for inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function, and E for exponential function. These functions are continuous as well as differentiable in their respective domains. Moreover, we have discussed if f and g are continuous and differentiable, then f plus g, f minus g, f into g are continuous and differentiable in domain of f intersection domain of g, and f upon g is continuous and differentiable in domain of f intersection domain of g minus those x for which gx is equal to 0, and FOG is continuous as well as differentiable. अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी होगी डिफरेंशिएबल भी होगी। उनका क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशिएबल भी होगा प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अगर एफ और जी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगी। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया था उस पर ये मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ कि एफ अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो पूरे के पूरे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। अगर ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो उसके सबसेट पे भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। दैट मींस इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 3 5, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 3 5। अगर ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो एफ क्या कर रहा है, एफ सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस ऑफ mean value theorem, which were continuity on the closed interval and differentiability on the corresponding open interval. If it is satisfying the conditions of mean value theorem, then we'll get a value of C which is between 3 and 5 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a. Now, f dash C means derivative of this function at C. तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, 3c square minus 36c plus 99 is equal to fp। b हमारे पास क्या है 5, तो इट इज 5 minus 3 into 5 minus 6 into 5 minus 9 minus 3 minus 3 into 3 minus 6 into 3 minus 9, क्योंकि ओरिजिनली तो आपके पास फंक्शन जो था दैट वाज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9। पहले मैंने इसकी जगह x की जगह पर 5 पुट किया फिर 3 पुट किया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। नाउ ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया, 3c स्क्वायर minus 36c plus 99 is equal to 5 minus 3 is 2, 5 minus 6 is minus 1, 5 minus 9 is minus 4, 3 minus 3 0, तो whole is 0 divided by 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 4 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो आपके पास क्या आ जाए 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3c square minus 36c plus 95 equals to 0. Now we have to find the value of c। उसके लिए हम quadratic formula जो हमने क्लास 10th में किया था उसको यूज कर रहे हैं। That was x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon twice of a। तो यहाँ पर b जो that is minus 36, तो उससे क्या आ जाए plus 36 plus minus square root of 36 is square root of 36 square that is 1296 minus 95 into 4 that is equal to 95 into 4 is equal to 200 minus 5 into 4 that is equal to 400 minus 20 that is 380 into 3 which comes out to be 1140 divided by 2 into 3 which gives you c is equal to
C is equal to 36 plus minus square root of 156 upon 6. 156 को I can write 12 into 13. 12 को मैं फर्दर कैसा लिख सकता, 4 into 3 into 13. तो ये किसके इक्वल हो जाए, 36 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन 6. तो C 2 कॉमन लेने पर हमारे पास आ गया 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन 3. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 39 इज लेस देन 49 एंड ग्रेटर देन 36. तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो 18 में 6 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे दैट विल बी 24 पॉइंट समथिंग. 24 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग. और 8 पॉइंट समथिंग जो होगा वो 5 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें C की वैल्यू जो फाइंड करनी थी दैट इज बिटवीन 3 एंड 5. तो 8 पॉइंट समथिंग इज ग्रेटर देन 5, सो वी आर रिजेक्टिंग 18 प्लस 39. तो C किसकी इक्वल हो जाएगा, 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 अपॉन 3. अब फर्दर इसको चेक कर सकते हो, 18 माइनस 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 3, that will be equal to 18 minus 6 12, that will be 11 point something divided by 3, that is equal to between 3 and 4, so it will be 3 point something, which belongs to 3 to 5. Hence LMVT is verified. Because LMVT verify करने का मतलब क्या है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हमारे को एक ऐसी वैल्यू मिलेगी at which f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, and that value in this case is this one. Let's have another question. Question is, verify LMVT for the function f of x equals to 2 sine of x plus sine 2x on closed interval 0. So this time f of x is equal to 2 sine of x plus sine 2x on closed interval 0 pi. If you look at this function, this is sine of x, this is another sine of x, and you know that sine function is continuous and differentiable in R, and sum of two continuous functions is continuous, sum of two differentiable functions is differentiable. Therefore, f being sum of two sine functions is continuous and differentiable in thus thus first, f is continuous in closed interval 0 to pi, and second, f is differentiable in open interval 0 to pi. f continuous है, f differentiable है, that means जितना भी दोनों conditions जो mean value theorem की satisfy हो जाएंगे, that is f satisfies the conditions of LMVT. Therefore, there exists C belongs to 0 to pi such that f dash C is equal to f of b minus f of a upon b minus a. fx हमारे पास क्या था, 2 sin x plus sin 2x
एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल टर्म, तो हमारे पास एफ डैश सी क्या बन जाएगा, 2 cos c प्लस 2 cos 2c इज इक्वल टू एफ पी, यानी कि x की जगह पर आपको पाई पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 sin पाई प्लस sin 2 पाई माइनस 2 sin 0 प्लस sin 2 into 0 divided by pi minus 0. इन दोनों टर्म्स में से you can take 2 common, so it will be cos c plus cos 2c, which gives you sin पाई का वैल्यू 0 होता है, sin 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 upon pi is 0. तो यहां से आपके पास क्या आ गया, cos 2c प्लस cos c इज इक्वल टू 0. अभी हमारे को इस एक्सप्रेशन को यूज करके c का वैल्यू निकालना है. So this gives you cos 2c is equal to minus times cos c. Since c is between 0 and pi, that means it is between first quadrant and second quadrant. तो हमारे पास क्या आ गया, this is equal to cos of pi minus c, which gives you 2c is equal to pi minus c, or if you will transpose the c on left hand side, you will get thrice c is equal to pi and c is equal to pi by 3, which belongs to 0 to pi. Hence LMVT is verified. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, there is another way to solve this problem. You can write cos 2c as 2 cos square c minus 1 plus cos c is equal to 0. यानी कि अगर ये सोल्यूशन नहीं लेना चाहते तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, cos square c plus cos c minus 1 equals to 0, जिसको मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 cos square c plus 2 cos c minus cos c minus 1 equals to 0, which gives you 2 cos c common, so cos c plus 1 minus 1 common, cos c plus 1 equals to 0. 2 cos c minus 1 into cos c plus 1 equals to 0. तो यहाँ से cos c minus 1 equals to 0, cos c plus 1 equals to cos c का वैल्यू 1 by 2, और यहाँ से cos c का वैल्यू minus 1, cos c का वैल्यू 1 by 2 कब रहता है, 60 पे, दिस इज cos of pi by 3, और cos c का वैल्यू minus 1 कब रहता है, cos of pi पे, तो c का वैल्यू क्या होगा, pi by 3, और ये वैल्यू हम रिजेक्ट करें बिकॉज इट इज नॉट बिटवीन 0 एंड pi, तो यू विल गेट द सेम आंसर. दैट इज योर चॉइस कि आप किस मेथड से करना चाहते हो. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. दिस टाइम वी आर हैविंग f of x as, question is verify LMVT for the function f of x equals to 2 plus x cube when x is less than equal to 1, and 3x when x is greater than 1. Okay, on the closed interval 0. Solution: f of x is equal to 2 plus x cube when x is less than equal to 1, 3x when x is greater than 1 on the closed interval 0 1. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. For x less than 1, f of x क्या है, 2 plus x cube, and for x greater than 1, f of x is equal to thrice of x, which are polynomial functions, and polynomial functions are continuous as well as, and polynomial functions are continuous and differentiable in R. Thus,
f is continuous and differentiable for x less than 1 or x greater than 1. बट फंक्शन जो है दैट इज बिटवीन 0 और 1, क्या ये इस पे कंटिन्यूस है या नहीं, वी हैव टू चेक दैट पार्ट. तो उसके लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी एट 1, left hand derivative at 1. This will be limit x approaches to 1 negative of f of x minus f of 1 upon x minus 1, which comes out to be x less than 1. For x less than 1, it is 2 plus x cube. So I can write limit x approaches to 1, 2 plus x cube minus f of 1 equal to 1 पे भी यही है, which is 2 plus 1 cube upon x minus 1, which equals to limit x goes to 1, 2 plus x cube minus 1 upon x minus 1 equals to limit x goes to 1, 2 plus x cube minus 1 is equal to, this is equal to limit x approaches to 1, x cube minus 1 upon x minus 1 equals to limit x approaches to 1, x minus 1 into x cube plus 1 upon x minus 1. This x minus 1 and x minus 1 cancelled out. जब आप x को 1 put करोगे, okay, let's do it again. F is continuous and differentiable in R implies F is continuous on for continuous and differentiable for x less than 1 or x greater than 1. Now, since this function is defined at 1 also, so we have to find out whether it is differentiable and continuous at 1 or not. So for that, left hand derivative at 1, this will be equal to limit x approaches to 1 negative of f of x minus f of 1 upon x minus 1, which equals to limit x approaches to 1 for x less than 1. f of x was 2 plus x cube. तो हम इसको 2 plus x cube से रिप्लेस कर देते हैं. 1 पे भी यही डेफिनेशन थी, minus 2 plus 1 cube upon x minus 1, which is equal to limit x approaches to 1, 2 plus x cube minus 1 upon x minus 1 equals to limit x approaches to 1, x cube minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x approaches to 1, x minus 1 into x square plus 1 upon x minus 1. ये कैंसिल हो जाएगा, तो x को 1 पुट करने पर यू विल गेट 3. या आप यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस x x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1. उससे भी आपके पास 3 ही आता है. नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1. This will be limit x approaches to 1 plus of f of x minus f of 1 upon x minus 1. In case of 1 plus, it was thrice of x minus 2 plus 1 cube upon x minus 1, which gives you limit x approaches to 1, 3x minus 3 upon x minus 1, which simplifies to, that means left hand derivative at 1 is equal to right hand derivative at 1 implies f is differentiable at x equals to 1. Since
Differentiability implies continuity. That means a function which is differentiable that is also continuous. This means f is continuous at x equals to 1. The final conclusion हमारे पास क्या हो जाएगा? Thus, first, f is continuous for every x belongs to closed interval 0 1. क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया था कि दिस इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स लेस देन 1 एक्स ग्रेटर देन 1, तो इसलिए 1 पे भी कंटिन्यूअस बताया, तो ये पूरे गिवन इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाएगा. सेकंड, f is differentiable for every x belongs to 0 1. Now f is continuous, f is differentiable, that means f is satisfying the conditions of LMVT, then there exists C belongs to open interval 0 1 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus, okay, f dash C, f of x को मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, f of x was 2 plus x cube when x is less than equal to 1 and 3x when x is greater than 1. और c कहाँ से लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में. अगर f of x हमारे पास c है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f dash x क्या हो जाएगा? 2 का डेरिवेटिव 0, इट इज 3x square when x is less than equal to 1 and 3 when x is greater than 1. हमें c की वैल्यू जो चाहिए that is between 0 and 1, that means x is less than 1, तो उस केस में f dash c क्या आ जाएगा? 3c square. ये वैल्यू इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे बिकॉज इट इज फॉर ग्रेटर देन 1 और c की वैल्यू लेस देन 1 है. Is equal to f of b. F of b means f of 1 minus f of 0 upon 1 minus 0, which gives you 3c square is equal to f1. 1 पे definition क्या है मेरे पास? It is 2 plus 1 का cube. 0 is less than 1, so it will be 2 plus 0 upon 1, which gives you 3c square is equal to 2 और 2 cancel हो जाएगा, तो 1 upon 1, which gives you c square is equal to 1 by 3. C is equal to plus minus 1 upon square root of 3. Reject c is equal to minus 1 by root 3 because it is not between 0 and 1, as it does not belongs to 0 to 1. Hence, c is equal to 1 by square root of 3 and hence LMDT is verified. दोबारा से देखिएगा इसको. आपको फंक्शन जो दिया हुआ था उसकी दो डेफिनेशंस थे. First definition was this one when x is less than 1 and 3x when x is greater than 1. तो अगर आप x लेस देन 1 पे चेक करें तो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं. जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो f of x फिर से 3x है, which is polynomial, so continuous as well as differentiable. That means जो हमारे पास फंक्शन है वो 1 से छोटे नंबरों के लिए कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, 1 से बड़े नंबरों के लिए कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है. तो क्या वो 1 पे कंटिन्यूस है, क्या वो 1 पे डिफरेंशिएबल है? तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 1 पे which was equal to 1, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके. राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला which is equal to 3, so that means left hand derivative and right hand derivative are same, so it means it is differentiable. और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो f कंटिन्यूस भी है 1 पे. so इससे मेरे पास क्या आ गया, वो फंक्शन जो गिवन था मेरे पास वो कंटिन्यूस है 1 पर, which means f is continuous on the closed interval 0 1, differentiable on the closed interval 0 open interval 0 1.
यानी कि एफ ने कंडीशंस को सेटिस्फाई किया एलएमवीटी के, तो हमारे को एक ऐसा सी मिलेगा जो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, जिसपे एफ डैश सी जो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। एफ डैश सी, एफ डिफरेंशिएबल है तो 2x क्यूब का डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव आ गया 3। सी 0 और 1 के बीच में, और ये वैल्यू उन नंबरों के लिए है जो 1 से बड़े हैं, तो हमें ये वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। तो मेरे पास आ गया 3c स्क्वायर। एफ बी, बी यहाँ पर है 1 के इक्वल, तो 1 पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही, तो हमने वैल्यू पुट किया, 0 पुट किया, उससे मेरे पास सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो 0 और 1 के बीच में नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो सी मेरे पास आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच बिलोंग्स टू 0 1, hence LMVT is verified। कोई क्वेश्चन क्वेश्चन है, let f is a function from close interval -5 to 5 to set of real numbers is differentiable and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of. So we can solve this question using Rolle's theorems as well as mean value theorem। मैं दोनों से आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम से करते हैं। We are given that f is differentiable on, given that f is differentiable on closed interval -5 since differentiability implies continuity, therefore f is continuous on closed interval -5। और यही तो थी हमारी कंडीशंस एलएमवीटी की, that is f satisfy the conditions of LMV, then there exists x belongs to, there exists x belongs to open interval -5 5 such that f dash x is equal to f of 5 minus f of minus 5, sorry f of b, यहाँ पर b हमारे पास 5 के इक्वल है, दिस इज ए बी, f of b minus f of a upon b minus a। Now f dash x is equal to f of 5 minus f of minus 5 upon, now we are given one specific thing here, f dash x does not vanish anywhere, f dash x does not vanish anywhere, vanish means खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता means f dash x is not equal to 0 for every x belongs to R, so I can use here, this is, this implies f of 5 minus f of minus 5 upon 10 is not equal to 0 because f dash x does not vanish anywhere। अगर इस 10 को ट्रांसपोज कर दे तो मेरे पास क्या आ गया, f of 5 minus f of minus 5 is not equal to 0 into 10, इसको ट्रांसपोज कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f of 5 is not equal to f of minus 5, so hence proved f of minus 5 is not equal to
एफ ऑफ, चलो इसको रोल्स थ्योरम से करते हैं। द सेम क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिएगा। एफ फ्रॉम -5 to 5 to r is differentiable and f dash x is not equal to 0 for every x belongs to, so with the help of rules, given f is differentiable on -5 5, since differentiability implies continuity, therefore f is continuous on close interval -5, ठीक है, and it was given that f is differentiable on closed interval, so I can take the corresponding open interval. Okay. Also, it is given that f dash x is not equal to 0 for every x belongs to R. This means f dash x is not equal to 0 for every x belongs to -5 to 5. But Rolle's theorem states if 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 f is continuous on closed interval -5 5, f is differentiable on open interval -5 5, and f of -5 is equal to f of 5, then there exists x belongs to -5 5 such that f dash x is equal to 0. But what we are given here, f dash x is not equal to 0. That means the given function f does not satisfy the third condition of Rolle's theorem. That is, f does not satisfy f of -5 equals to 5, क्योंकि दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती तो f dash x 0 मिलता हमारे को किसी x which is between -5 and 5, बट हमें दिया हुआ कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस पहली दो कंडीशंस अगर मीट कर गई तो तीसरी कंडीशन जो मीट नहीं हो रही है, तो हेंस f of -5 is not equal to f of 5 over। इतना सिंपल था ये, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा गो विद द लैग्रेंजेस थ्योरम, बिकॉज दैट इज गिविंग द डायरेक्ट एप्लीकेशन कि आप अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन ने एलएमवीटी की कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो आपको एक एक्स ऐसा मिलेगा विच विल सेटिस्फाई दिस थिंग, एंड इट वाज गिवन दैट f dash x is not equal to 0, तो यू डायरेक्टली गेट दिस वन। इतना थ्योरी वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, so this method is much better. So we keep our video up to this thing. I have tried to cover the concepts of Lagrange's mean value theorem, but every question I have not taken, so you can practice other questions. So to get perfection over the mean value theorem. So thank you for this watching this video. Hope you will practice all these questions at your place and come up with a good क्या बोलते हैं confidence on this concept. Thank you.